Good afternoon. Welcome. Welcome. Yeah, good afternoon. Good afternoon, sir. Good Yeah. afternoon, Good afternoon. Good Good afternoon. afternoon. Yeah, good afternoon. Thank you. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good Welcome. afternoon, Yeah, Good good afternoon, afternoon. sir. Good afternoon. Welcome all of you in this session. We are taking the case taking session, and today's session is on the basis of tomorrow's lecture. That is the approach in treatment of chronic disease. Approach in treating of chronic disease. तो यही अप्रोच पे हम आज केस देखेंगे. केस ऑन स्लो प्रोग्रेसिंग साइकोटिक डिजीज. कल हमने ये अप्रोच देखा था, आज जस्ट इसे ओवरव्यू करेंगे. कल ये हमने 3 अप्रोच देखे थे, तो तीनों अप्रोच आप लोगों को आई थिंक अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, बिकॉज दिस अप्रोचेस आर इम्पोर्टेंट फॉर अ सक्सेसफुल प्रैक्टिस. आपको if you want to become a successful doctor, then follow these approaches. I am very glad and lucky person. When I was student, I went for a seminar at Bombay. The seminar was in Shanmukananda Hall, and seminar was Dr. Vidul Kos. In this seminar, I met with Dr. Praful Vijayakar sir. Sir was there, and sir was distributing a photocopy of acute chart. When I get this photocopy of acute chart, I saw it, and I little but कुछ तक ऐसा लगा कि क्या है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा. उसे फोल्ड किया, जब में रख दिया. लेकिन सर वहां पे एक 10 to 20 पीपल्स के बीच में सर थे, और सर कुछ उन लोगों को बता रहे थे. कुछ डिस्कशन वहां पे सर का चालू था, तो मैं जस्ट वहां पे खड़ा रहा, थोड़ा सा सुनते रहा. तो सर का डिस्कशन, सर वाज डिस्कसिंग द थ्योरी ऑफ एक्यूट चार्ट एंड एक्यूट बुक. तो जस्ट मैंने ऐसा निकाला और देखा कि सर जो जो बोल रहे थे वो थोड़ा सा मैंने उसमें देखना शुरू किया. फिर भी कुछ समझा नहीं, फिर वापस रख दिया, और वहां से 3 बुक्स परचेज किए. एक एक्यूट का थ्योरी ऑफ सपरेशन एंड मॉडर्न साइंस एंड होम्योपैथी. फिर वो बुक्स लेके घर पे आए, तो एक्यूट का बुक लिया पढ़ने के लिए, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था. एक बार कंप्लीट पढ़ लिया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया. सेकंड टाइम भी लिया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, फिर रख दिया. और उसके आफ्टर 10 to 15 days एक इनविटेशन आया. उसमें ब्रोशर था सर के वर्कशॉप का. दैट वर्कशॉप वाज हेल्ड एट महाबलेश्वर. 8 days workshop, and the fees of that workshop was 15,000.
तब 15,099 में बहुत ज्यादा लगती थी, क्योंकि 15,000 तब की फीस बोले तो हमारे 2 महीने की कमाई। फिर भी सोचा कि चलो एक बार जाके देखते, एटलीस्ट ये बुक्स के बारे में कुछ पूछ लेंगे सर। फिर कैसा तभी इधर उधर से जुड़ा जड़ा के हमने फीस भरी और वो सेमिनार को गए, वर्कशॉप को गए। 8 डेज का वर्कशॉप था महाबलेश्वर में, एट होटल गौतम, बहुत अच्छी होटल थी। फिर हम जब जैसे ही महाबलेश्वर पहुंचे तो देखो उस वक्त जो टीम थी सर की, जो हमने बुक्स के प्रिफेस में जो डॉक्टर्स थे के 7 डॉक्टर्स, वो टीम ऐसे लाइन से जैसे मैरिज हॉल में खड़े होते हैं ना, तो लाइन से इधर से 4 इधर से 4 खड़े थे गेट पे, और हाथ में गुलाब का फूल, और लास्ट में सर ने हमें प्रोडक्टिव होम्योपैथी के लेवल के सूटकेस दिए थे गिफ्ट। तो हर डेलीकेट का स्वागत उस फूल से हो रहा था, गुलाब के फूल से हो रहा था। बहुत अच्छा लगा कि ये कुछ नया, और इतने बड़े डॉक्टर्स गेट पे खड़े रह के डेलीकेट्स का स्वागत कर रहे। कुछ अजीब सा भी लगा, कुछ सरप्राइजिंग भी लगा, और बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। फिर जो नेक्स्ट डे से वर्कशॉप शुरू हुआ, दैट वर्कशॉप इज not only the learning teaching program, but it is like a just primary school based teaching. सर ऐसे रोज थे चेयर टेबल के, और सर बीच में घूम के हर डेलीकेट की तरफ ध्यान देते थे, कौन क्या कर रहा है, किसको क्या प्रॉब्लम जा रहा है, और हर चीज एक्सप्लेन करके बता रहे थे, हर वर्ड एक्सप्लेन करके बता रहे थे। उस वर्कशॉप में सर ने मॉडर्न साइंस का जो किताब हमने रीड किया, वो सर ने पूरा बुक वहां पे हमें टीच किया। देन एक्यूट थ्योरी एंड सप्रेशन, तो ये 3 किताबें हमने उस वर्कशॉप में सीखी। फिर जाके वो ये समझ में आया, फिर घर पे आके वापस वो जब रीड किए तो 100% समझ में आया। फिर उसे हमने फॉलो करना शुरू कर दिया, सप्रेशन चार्ट को और एक्यूट के बुक को। तो इतने एक्सलेंट रिजल्ट आना शुरू हो गए जब हम अप्लाई कर रहे थे। ये जो अप्रोचेस हम अभी सीख रहे हैं, ये अप्रोचेस सर ने उस वर्कशॉप में हमें सिखाए थे। फिर इसी अप्रोच के साथ हम आगे बढ़े, प्रैक्टिस किए, और इतने एक्सलेंट रिजल्ट आना शुरू हो गए। जब ये शुरुआत हुई और जो दिन सर को मैं मिला, वो तो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लकी डे बोलूंगा मैं, कि उस दिन सर से मुलाकात हुई। दैट डे इज द फर्स्ट लकी डे ऑफ माय लाइफ। तब से जो शुरुआत हुई तो अब तक रुकी नहीं। इतने सारे पेशेंट्स अच्छे किए। दिस इज द ओनली ब्लेसिंग्स ऑफ डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर सर। ये सर की ब्लेसिंग के बगैर पॉसिबल ही नहीं है। आज भी ऐसा लगता है कि सर हमारे पीछे ही है, सर हमारे बाजू में खड़े। जब भी कोई डिफिकल्टी आती है, प्रॉब्लम आता है, तो इन्हीं किताब में से उसका सॉल्यूशन मिलता है। ऐसा लगता है सर खड़े हैं बताने के लिए। तो ऐसी ही आज मैं ये केस बताऊंगा आपको, स्लो प्रोग्रेसिंग साइकोटिक डिजीज के ऊपर, कि डिजीज कैसा प्रोग्रेस होता है और साइकोटिक डिजीज कैसा क्योर होना चाहिए। ये केस में से आपको बहुत कुछ मिलेगा। कैन लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस केस। तो जो हमने कल देखे थे 8 स्टेप्स हाउ टू प्रोसीड इन स्लो प्रोग्रेसिंग साइकोटिक डिजीज। स्टेप फर्स्ट was first to identify the miasm.
है ना। तो सबसे पहले हमें माइजम फाइंड आउट करना है, देन जर्नी ऑफ डिजीज, any recurrent illness in past, suffered from any major illness or history of suppression. Step 3, cause if any, if recent, if related. Then fourth step, find the rubric of miasm from mind and general dispositions. Then generals, thirst and thermals, peculiar physicals or generals, repertorize and differentiate the remedies according to disposition. If you get 2 or 3 remedies, then the last step you can apply, differentiate the remedies according to disposition. So this case, सर ने ये भी बताया था इसमें कि फुटनोट 120 में एक्चुअली क्या लिखा है क्रॉनिक डिजीज के लिए और स्लो प्रोग्रेसिंग साइकोटिक डिजीज के लिए. Almost all psychotic slow progressing cases will show taint of syphilitic symptoms at mental level or physical level, which should not be neglected. Yes, अगर मिलता है तो हमें इसे निग्लेक्ट नहीं करना है. अगर मिल ही नहीं रहा तो हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो कुछ तभी, जैसे आप एकदम स्ट्रॉन्ग सिपिलिटिक नहीं मिल रहा है लेकिन सिपिलिटिक टेंट अगर वहां पे मिल रहा है, जैसे सोरोस सिपिलिटिक है, साइकोसिपिलिटिक है, तो हमें उसे भी कंसिडर करना है. So do not be neglected and has to be searched properly and considered while arriving GCS. Syphilitic aspect in the case is neglected, then we will be prescribing on the psychosis. अगर हमने उसे neglect किया तो you are prescribing on the only psychosis, and that psychosis may suppress the case or spoil the case. ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है लेकिन हो सकता है. So which can either suppress the patient or result in complete cure. Yes. एक तो कंप्लीट क्योर नहीं होगा या फिर केस सप्रेस हो जाएगी, स्पॉइल हो जाएगी. इसलिए हमें मिलता है, जब तक मिलता है आप देखते रहो, 100% कुछ ना कुछ वहां पे सिपिलिटिक टेंट मिलेगा. Yes. तो ऐसे केसेस जब हम ट्रीट करते हैं तो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, सबसे पहले हमारे सामने आते हैं कि ये कैसे समझना कि ये केस साइकोटिक है, सिपिलिटिक है, सोरिक है, क्रॉनिक है कि एक्यूट है. मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स थिंक्स अबाउट डायग्नोसिस, कि पहले हर किसी को यही हैबिट होती है कि डायग्नोसिस क्या है, देखो कौन से डिजीज का पेशेंट है. तो एक्चुअली डायग्नोसिस क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायग्नोसिस? हु विल टेल the meaning of diagnosis? Who knows the meaning of diagnosis? Please unmute and tell. Yes. कौन बताएगा डायग्नोसिस मतलब क्या? हेलो. Yes. हाँ सर, डायग्नोसिस मतलब इट्स अगेन सिम्टम कॉम्प्लेक्स व्हिच गिव्स यू द नेम ऑफ द डिसीज, यू नो, ऐसा. Okay, simple symptom complex which gives us the name of disease. Very simple definition. Yeah. बट जब भी हमें डायग्नोसिस करने का टाइम आता है
तो ये हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि डायग्नोसिस कैसे करना। ये हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं है तो ये मॉडर्न साइंस के डॉक्टर्स को भी डिफिकल्ट है। हम तभी कैसा तभी हमारा नॉलेज लगा कि हमने जो सीखा, हमने जो पाया है उसमें से कुछ थिंक करते हैं, जैसे कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना लेते हैं। लेकिन मोस्टली जिनका मेन काम है डायग्नोसिस टाइटल करना, वो मोस्टली डायग्नोसिस टाइटल करते हैं ऑन द बेसिस डायग्नोसिस टाइटल करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होंगे तब तक वो बताते ही नहीं क्या हुआ, है ना। यस, तो हमें डायग्नोसिस करना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। तो हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स देख रहे हैं तो डायग्नोसिस करना जरूरी है क्या? डायग्नोसिस हमारे लिए मीनिंग रखता है क्या? तो पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायग्नोसिस। The identification of the nature of illness, the identification of the nature of an illness is called diagnosis. Other problem by examination of the symptoms, yes, or the process of determining the nature of disease or the disorder and distinguishing it from other possible conditions. So the diagnosis is nothing but the identification, determining the nature, distinguishing the nature of the symptoms is called illness. What is the importance of diagnosis in homeopathy? क्योंकि हैनेमन ने कहा है कि we treat the man in disease, not the disease in man. तो हमें डायग्नोसिस देख के क्या करना है? डायग्नोसिस के बेस पे, नाम के बेस पे हम ट्रीट करेंगे क्या? To understand the mechanism of the disease. Yes, very good. तो डायग्नोसिस करना होम्योपैथी में जरूरी है। Few people will say yes, few people will say no. Yes, for what? To identify the mechanism, for pathology, for journey and cure of disease and prognosis. एक बार डायग्नोसिस पता चल गया तो हम सोचते हैं कि चलो डायग्नोसिस मिल गया, अब हम इसमें से माइजम ढूंढ पाएंगे कि ये डिजीज का माइजम ये होता है, उसकी पैथोलॉजी ये होती है, वहाँ इन्फ्लामेशन है, कंस्ट्रक्टिव पैथोलॉजी है, डिस्ट्रक्टिव पैथोलॉजी है, फिर ये डिजीज किस तरह से हुआ, क्या क्या जर्नी रही होगी, कहाँ कहाँ से सेपरेशन हुआ, किस तरह से पेशेंट इस लेवल तक आ पहुंचा, फिर क्योर होगा कि नहीं होगा, है ना। बहुत से डिजीज ऐसे जो इरिवर्सिबल होते हैं, नॉन क्यूरेबल होते हैं, है ना। तो इस पर से हमें उसका प्रोग्नोसिस पता चलता है। तो डायग्नोसिस होना, डायग्नोसिस पता चलना कुछ फायदेमंद भी है और नहीं भी है। तो जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि इट इज नॉट necessary to diagnose the case, it is not helpful to us. Why? Because miasm, we can understand the miasm from the symptoms, we can understand the pathology from the severity of symptoms, we can understand, and this is our job, our work, to rule out first, to find out the journey of disease and cure. If all symptoms will eradicated or completely gone, then we can say it is a cure. And on the basis of this, we can 100% कह सकते हैं कि
prognosis is good or bad. So the diagnosis is not such an important thing for us. Yes. So it is no, because no rule is hard and fast in homeopathy. जरूरी नहीं है, इसलिए इसे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, क्योंकि हमें ट्रीट करना है टोटलिटी ऑफ सिम्टम, not the diagnosis, not the disease. Only we can treat the totality of symptoms. So this is the case of benign tumor of neck. आप देख रहे हैं कि इनके नेक पे राइट साइड पे एक स्वेलिंग दिख रहा है। इट इज अ हार्ड स्वेलिंग। आप लोग बोलेंगे कि ये कुछ एब्सेस के जैसा दिख रहा है, कोई बोलेगा सिस्ट के जैसा दिख रहा है, कोई बोलेगा नहीं ट्यूमर है, क्योंकि नेक के स्वेलिंग ऐसे ही होते हैं। इस पे कुछ डॉट्स दिख रहे हैं, तो ये डॉट्स नहीं है, ये पेशेंट के मम्मी ने उस पे बजरंग लेप लगाया था, जिसकी वजह से उस पे कुछ रह गए जो एकदम स्टिक हो गए, निकल नहीं पाए। When this patient came to me, actually his grandfather brought him at me because next day he was planned for surgery, और उसके दादा ने वहां से उसे मेरे पास खींच के लाया कि नहीं, पेशेंट के पेरेंट्स रेडी नहीं थे, लेकिन दादाजी ही वॉज माई पेशेंट, और वो आए इसको लेके और मुझे बोले कि डॉक्टर साहब बहुत फोर्सफुली मैंने इसे लाया है और इसको आपको अच्छा करना ही है। जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है ना, तो उसको बहुत होप लेके आता है। एक तो होप लेके आएगा, नहीं तो हमारे सिर पे तलवार लेके आएगा कि इसे करना ही पड़ता, कितना टाइम लगेगा, होगा कि नहीं होगा, और ऐसे कैसे। अब देखो नेक्स्ट डे इसकी सर्जरी प्लान हुई थी, ये एडवांस देके आए थे हॉस्पिटल में, और ऐसे केस में दादाजी बोल रहे हैं, ग्रैंडफादर बोल रहे हैं उसके कि हमें 2-3 दिन में कुछ दिखाना पड़ेगा इसके फादर को, नहीं तो ये सर्जरी कर डालेंगे। और मेरी इच्छा नहीं बोले सर्जरी करने की, क्योंकि अगर सर्जरी करेंगे तो लाइफ लॉन्ग उसके गले पे मार्क रहेगा। इसलिए पहले ही मेरे सिर पे तलवार रख दी कि 2-3 दिन में कुछ दिखाना है। तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा मुश्किल वाला टाइम होता है कि अब क्या करें, क्योंकि यहाँ पे ओनली दादाजी की इज्जत का सवाल नहीं, तो अपनी भी इज्जत का सवाल है। फिर मैंने बोला ठीक है, आप इतने विश्वास के साथ इसे लाए तो 100% होम्योपैथी वहां पे कुछ ना कुछ चमत्कार दिखाएगी। So this was the patient. He was 11 years male child. मैं आपको उसका वीडियो दिखा देता हूं।
आपको दिख रहा है वीडियो? यस और नो? Okay. सर यस सर दिख रहा है। ओके, Yes, Sahadeo. see the swelling, that is the hard swelling inside. क्या नाम है आपका? अक्षय. Yes. कल्पना, आपने देखा था ये पेशेंट? यस कल्पना. अनम्यूट नहीं हो रहा. नाही, आवाज येतोय तुझा. हॅलो, येतोय हा. आवाज? हा येतोय कल्पना, बोल. नाही, ही केस नाही बघितली. अच्छा, कल्पना इज माय असिस्टेंट, और जो मैंने ब्रेन हेमोरेज की केस दिखाया था तो कल्पना ने उसे उसकी हिस्ट्री लिया था. केस टेकिंग कल्पना Yes, की sir. थी. यस, कल्पना इज द प्रूफ ऑफ दैट पेशेंट. यस. येस सर. या. सो द ये जो स्वेलिंग होते हैं नेक के, for the differential diagnosis of the swelling of neck can be divided into acute and chronic swellings. These swellings are again divided according to the site of tumor, like midline swelling and lateral swellings. Acute swellings are mostly because of cellulitis, boil, carbuncle, and lymphadenitis. Because of only inflammatory process, these are acute swellings. And chronic swellings are cystic, pulsatile swelling and solid swellings. So cystic swellings जो होते हैं, that may be because of bronchial cyst, thyroglossal cyst, dermoid cyst, cystic hygroma, sebaceous cyst, cystic adenoma of thyroid gland, and cold abscess. Pulsatile swellings because of the aneurysm of artery, that is carotid artery or subclavian artery, or carotid body tumor, lymph node swelling, primary toxic goiter, and the solid swellings are due to arising from thyroid, bronchogenic carcinoma, and sternomastoid tumor. So this was not acute swelling, it was chronic swelling. And chronic swelling में
ये क्या था? सिस्टिक था, पल्सेटाइल था कि सॉलिड था? सिस्टिक स्वेलिंग्स आर ऑलवेज स्मूथ and this swelling is hard. No pulsations felt on the swelling. That means pulsatile swelling भी नहीं था. So it was hard swelling. अब hard swelling तो था, लेकिन hard swelling में वो क्या था? थायराइड, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा और स्टर्नोमास्टोइड ट्यूमर. So it is very simple to understand this. थायराइड स्वेलिंग रहता था तो सेंटर में रहता था, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा रहता था तो सेंटर में रहता था. It was स्टर्नोमास्टोइड ट्यूमर. स्टर्नोमास्टोइड जो मसल होती है वो बैक ऑफ ईयर से यहाँ पे आती है, क्लेविकल पे. तो ऐसे क्रॉस वाइज ये मसल्स होती है और उस मसल का ये ट्यूमर था. यस, तो ये उस मसल का था कि नहीं, क्योंकि अभी तो वो मसल नहीं दिख रही उसके गले पे. मैंने ओनली आपको वीडियो दिखा, जूम दिखाया, वो जूम करके भी दिखाया और जूम आउट में भी दिखाया, इसीलिए कि आप देख सकते हैं, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वहां पे मसल दिख नहीं रही है. तो ये हमें लास्ट में पता चलेगा कि वो किस चीज का ट्यूमर था. So we treat the man in disease and not the disease in man. That's why we don't have need of diagnosis. तो हमारा ऑर्गेनन क्या कहता है? हैनेमन जी क्या कहते हैं? In aphorism number 6, he writes, the unprejudiced observer, well aware of the futility of transcendental speculations which can receive no confirmation from experience, be his power of penetration ever so great. Means, take note of nothing in every individual disease except the changes in the health of the body and of the mind. That means which can be pursued externally by means of the senses. That is to say, he noticed only the deviations from the formal healthy state of the now diseases individual which are felt by the patient himself, remarked by those around him and observed by the physician. All these perceptible signs and represent the disease in its whole extent, that is together they form the true and only convincible portrait of the disease. इस एपोरिज्म ने हैनेमन ने ओनली सिम्टम्स, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के लिए कहा है. क्या कंक्लूजन है इस एपोरिज्म का? So conclusion of this aphorism, the meaning, whole meaning of this aphorism is, for the physician, the disease consists only of the totality of its symptoms. The disease consists. That means हमें देखना है only totality of symptoms. In aphorism 7, he again said that now as in the disease from which no manifest, exciting or the maintaining cause has to be removed, we can pursue nothing but the morbid symptoms. It must be the symptoms alone by which the disease demands and points to the remedy suited to relieve it. And moreover,
The totality of the symptoms of this outwardly reflected picture of the internal essence of the disease, that is, of the affection of the vital force, must be the principle of the soul, means whereby the disease can make known what remedy it requires. Why he writes like this? Because we want only totality of symptoms, and we match the totality of symptoms of the disease and the remedy. That's why he writes here, disease can make known what remedy it requires. The only thing that can determine the choice of the most appropriate remedy, and thus in the word, the totality of the symptoms must be the principle. Indeed, the only thing the physician has to take note of in every case of disease and to remove by means of his art, in order that it shall be cured and transformed into health. Yes. That means, whilst paying attention to those circumstances, the physician needs only to remove the totality of the symptoms in order to cure the disease. तो हमें सबसे पहले totality of symptoms देखना है, and that after that वो totality of symptoms हमें remove करना है, cure करना है. Yes. In aphorism 8, मैं जो केसेस बताऊंगा इसमें आपको रेफरेंसेस दूंगा ऑर्गेनॉन के, हैनेमन की थ्योरी के, ताकि जो क्योर है, जो केसेस है, उसको वो किस तरह से क्योर हुआ, किस तरह से ट्रीट हुआ, उसके लिए प्रूफ क्या है, तो वो है ऑर्गेनॉन. यस, इसीलिए मैं ये रेफरेंसेस यहाँ दूंगा ताकि हम ऑर्गेनन भी इसमें से सीख सके और ऑर्गेनन को हम प्रूव कर सके कि हम जो कर रहे हैं वो राइट है कि रॉन्ग है. So it is not conceivable nor can it be proved by any experience in the world that after the removal of all the symptoms of the disease and of the entire collection of the perceptible phenomena, there should or could remain anything else beside health, or that the morbid alteration in the interior could remain uneradicated. Yes, means if all the symptoms be eradicated, if all the symptoms be eradicated, the disease is always cured internally in its whole extent. The total symptoms चले गए तो वहां क्या बचा? कुछ भी नहीं. That means the cure, cured internally in its whole extent. Yes. Cure इस तरह से होना चाहिए, और यही हम इस केस में देखेंगे किस तरह से क्योर हुआ, इन इट्स होल एक्सटेंट हुआ कि नहीं. यस, इन एफोरिज्म 17 बहुत ही अच्छा लिखा है डॉक्टर हैनेमन ने. Now as in the cure effected by the removal of the whole of the perceptible signs and symptoms of the disease, the internal alteration of the vital principle to which the disease is due, consequently the whole of the disease is at the same time removed. It follows that the physician has only to remove the whole of the symptoms in order at the same time to abrogate and annihilate the internal change. Yes, that is to say, the morbid dearrangement of the vital force. Consequently, the totality of the disease itself. But when the disease is annihilated, the health is restored. जैसे डिजीज जाना शुरू हो जाएगा, दैट मीन्स सिम्टम जाना शुरू हो जाएंगे, वहां पे हेल्थ रिस्टोर होना शुरू हो जाएगी. And this is the highest, the sole aim of the physician. Yes. So who knows the true object of his mission, which consists not in learn,
sounding, prating, but in the giving aid to the sick. और conclusion क्या है इस aphorism का? The practitioner therefore only needs to take away the totality of the signs and the symptoms of the disease individual, and he has removed the entire disease. This is the highest, the sole aim of the physician. हमें हैनेमन ने कभी ये नहीं कहा कि फर्स्ट डायग्नोज द केस. हैनेमन ने ऑलवेज कहा है कि फर्स्ट टेक द टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स एंड रिमूव द टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स. यस. So history of patient. He has habit of bedwetting. Because of that, कितने साल का ये बच्चा है? 7 years. 11 years. 11 years बोला. Sorry, 11 years. He has habit of bedwetting. Because of that, he was suffering with recurrent UTI. And every time infection was suppressed by antibiotic. What is this? What is the meaning of this? देखो हमें 8 पॉइंट्स कवर करना है. उसमें से ये एक पॉइंट है कि हमें जर्नी ऑफ डिजीज मिल रहा है. Yes, sir. Yes. Infection goes to other system. Yes, but it is infection means it is SORA. Now SORA, recurrent infection, that means SORA is suffering here. Recurrent UTI suppressed. तो इस पर से हमारे जर्नी ऑफ डिजीज हो जाएगा. देन रिवर्सल ऑफ डिजीज. तो हमें जब हम ये सिम्टम, इंटरनल सिम्टम्स निकालेंगे तो हमें आउटवर्डली ये सिम्टम दिखना चाहिए एट द लास्ट. दैट इज द यूटीआई. आल्सो हिस्ट्री ऑफ इंजुरी. देखो एलिमेंट्स फ्रॉम बताया हमें फाइंड आउट करना. सो आल्सो हिस्ट्री ऑफ इंजुरी ऑन राइट साइड ऑफ नेक ड्यू टू फॉलिंग ऑन कॉर्नर ऑफ द वॉल. तो हमें पॉजिटिव फैक्टर मिल गया कि ड्यू टू इंजुरी, एलिमेंट्स फ्रॉम इंजुरी on the right side of the neck. His father is tailor and he likes working with father. देखो 11 years का बच्चा है. He likes working with father at the shop and is not interested in the study. Very haughty and jealous, because he refuses to share things with friends, even with his younger sister. But when parents ask to give, he is agreed to share. Having fear of dark, public, physician, injection, and operations. This is one of the reasons that he forced his grandfather and was crying continuously कि I am not ready for operation. दादाजी मुझे ऑपरेशन नहीं करना है. और पोते का सबसे ज्यादा क्रेज होता है दादाजी. Yes. So chief complaints was big hard oval to elongated swelling on right side of neck since 2 months. Mild painful, chronic headache. These are the chief complaints. Physical generals was thermal hot patient, thirstless,
desire pizza and hot food, aversion sweet, perspiration profuse on nose, what is the layer of this disease? Who will tell? What is the layer of this disease? आप लोगों, yes. Third layer. Yes, third layer. Yes, very nice. Third layer, but third layer में क्या? Third layer में क्या है? Connective tissues. Connective tissue, muscle. Very good. Connective tissue muscles. है ना? That means the third layer. So third layer connective tissue. And what is the miasm? That is psychosis. Rubrics. Tell me the rubrics. क्या क्या देखा आपने हिस्ट्री में? Conscientious diligent. कंसाइंशियस डिलीजेंट. ये कंसाइंशियस डिलीजेंट था. पापा के साथ वर्क करता है. He has aversion to study. Business minded sir. Business minded बोल सकते हैं. Yes. But in this case, business minded, it is common for that community. He belongs to Sindhi community. So for Sindhi community, it is common. है ना? Business उनका मेन पेशा है. इसलिए यहाँ हम ये भी कंसिडर नहीं कर सकते. सर हॉटी है कह रहे. Yes, haughty है. Sir, right-sided, timid, hot, suspect, aversion to sweet. Yes, sir. Yes. ये rubrics. Right-sided, Hot, trustless, hot, right-sided, trustless, aversion to sweet, aversion to sweet. sweet. Yes. और ये tumor, sir. Yes. लेकिन सिपिलिटिक ट्रेट हमें फाइंड आउट करना है. तो सिपिलिटिक ट्रेट इसमें क्या है? Jealousy sir. Yes. Jealousy. No, it is psychosis. Jealousy, it is psychotic. देखो, जैसा हैनेमन ने कहा है कि हमें टेंट ढूंढना है. सिपिलिटिक टेंट, दैट मीन्स पोल्यूशन. कि सिपिलिटिक स्टार्टिंग कहाँ पे हुई? And so why to Yes. Here is search syphilitic trend, sir? In psychotic cases, first find out the syphilitic taint, syphilitic rubric. एक या तो माइंड लेवल पे या फिर फिजिकल जनरल लेवल. सर उनको रिकरेंट यूटीआई होता था तो दैट इज सोरिक. सर सिपिलिटिक टेंट हमें इसलिए ढूंढना है कि अगर हमारी रेमेडी हमने गलती से भी पूरे साइकोटिक रूब्रिक ले लिए और उसमें प्योर साइकोटिक रेमेडी आई तो वहां पे सप्रेशन हो सकता है. दैट ट्यूमर मे कन्वर्ट इनटू सिपिलिटिक, मे बिकम बिनाइन, बिकम मैलिग्नेंट. इसीलिए हमें फर्स्ट सिपिलिटिक ट्रेट फाइंड आउट करना है. और सिपिलिटिक ट्रेट क्या था अकॉर्डिंग टू डॉक्टर विजयकर सर? सर ऑलवेज से all desires are psychotic and all aversions are syphilitic. Syphilitic. Right? So he has aversion to study.
11 years boy, 11 years का बच्चा अगर स्टडी में इंटरेस्ट नहीं रखता है, that means it is not a good, Uncommon. so it is uncommon. It is important to us. So aversion to study, that means non-diligent, right? Non-diligent. Yes, sir. So haughty, timidity, public appearing, timidity in public appearing, jealousy, aversion to study, hard on inferior, soft with superior, है ना? खुद कभी शेयर नहीं करेगा उसके जो भी लाइक्स है या फिर कोई भी चीज उसकी खिलौने है कुछ भी है वो शेयर नहीं करता है, लेकिन वही अगर पेरेंट्स ने उसे बोला तो वो शेयर करेगा. दैट मीन्स हार्ड ऑन इंफीरियर एंड सॉफ्ट विथ सुपीरियर. हॉटी पेशेंट, hot patient, thirstless and hot food. After repatriation, the remedy will be lycopodium. Yes, बबलू राउत जी आपका हैंड राइज है, बताइए, बोलिए. उसमें एवर्जन टू स्वीट वगैरह नहीं क्या सर? नहीं, एवर्जन टू स्वीट नहीं है, डिजायर फॉर हॉट फूड है. Yes. Sir, Lyco is the diligent remedy. Sir. Lyco is patient the is diligent non-diligent. remedy and patient is the non-diligent. So देना Yes. कि नहीं? नहीं देना चाहिए सर. Yes, नहीं देना. सर देना चाहिए सर. वो साइकोटिक में नॉन डिलीजेंट रहता है. हाँ, very good. किसने बोला? Very डॉक्टर good. बबलू राउत. Yes, Yes, sir, very, yes, sir. very good answer. Very good answer. Yes. So lycopodium may be the non-diligent in psychotic, अच्छा. diligent in sora. Yes. Okay. Diligent in sora and syphilitic. So अगर वो रियली नॉन डिलीजेंट रहता था, देखो हम यहाँ पे डिलीजेंट नॉन डिलीजेंट कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं एवर्जन टू स्टडी. हमने कंसाइंशियस नॉन कंसाइंशियस रूब्रिक नहीं लिया, हमने जो है रियल उसमें प्रेजेंट, दैट इज द एवर्जन फॉर स्टडी, वो रूब्रिक लिया है. एवर्जन टू स्टडी मींस मेंटल वर्क, बट ही हैज नेवर एवर्जन टू वर्क. वो तो 11 ईयर का था, फिर भी फादर के साथ दुकान में जाता था, वहां पे फादर ने जो जो काम बोला करता था. Even he can iron the clothes. शर्ट के बटन भी वो लगाता था. So he was नॉन डिलीजेंट नहीं था, वो डिलीजेंट था लेकिन एवर्जन टू मेंटल वर्क था. यस. तो इसमें पर्सनल इंटरेस्ट रहेगा ना, उसमें तो रहेगा, तो वो इंटरेस्ट उसका वर्क में है लेकिन स्टडी में नहीं है. बहुत से स्टूडेंट्स रहते हैं ऐसे. जी, बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो स्टडी में एवर्जन होता है, लेकिन जो गेम्स होते हैं हार्ड गेम्स जैसे फुटबॉल, हॉकी, इनमें क्रिकेट, इनमें उन्हें बहुत यस सर. मतलब लाइकिंग होती है या फिर बहुत वो उसमें एकदम पारंगत रहता था. परफेक्ट होते हैं. यस, हाँ. परफेक्ट होते हैं. दैट मीन्स जैसे सचिन तेंदुलकर. इंस्टिंक्टिव ये है ना सर, उसका बेसिक इंस्टिंक्ट अलग रहेगा ना सबका. यस, सचिन तेंदुलकर वाज वीक इन स्टडी बट वेरी गुड इन क्रिकेट. Very good player in cricket. यस, तो उन्हें अपन नॉन डिलीजेंट कहेंगे? यस सर. नहीं, he was diligent. क्योंकि स्टडी में इंटरेस्ट नहीं है, इसका मतलब ये इतना हार्ड एंड फास्ट मत लो कि स्टडी में इंटरेस्ट नहीं तो वो नॉन डिलीजेंट ही है, लेकिन उन्होंने उनका काम इतने परफेक्टली किया, दैट मींस ही इज डिलीजेंट कंसाइंशियस. Strong sense of duty. यस. तो lycopodium single dose was given and see the follow-ups.
Sir, potency, बताता like बताता हूँ 30. ओके, वीडियो दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. सीधा फॉलो। क्या दिख रहा है? The swelling तो कम हो गई, थोड़ा सा पस जैसे दिख downward. रहा है. Sir, downward side ला आलेला आहे swelling. यस, ये देखो यहाँ का कम हो Yes, गया sir. है ना? हाँ. मतलब ये ट्यूमर में भी हेरिंग्स लॉ दिख रहा Hearing's है, laugh. अबो डाउनवर्ड, अबो Up, डाउनवर्ड। down. और आपको ये दिख रहा होगा ये प्रोमिनेंस। Yes, sir. Yes. Mastoid gland. दिस इज द मसल। जैसे जैसे स्वेलिंग कम होगा, ट्यूमर कम होगा, मसल क्लियर दिखेगी। कैसा लग रहा है उस दिन से? अभी दर्द नहीं हो रहा। दर्द कुछ भी नहीं। और सूजन, वो जो गठान थी पूरी कैसी लग रही? कम लग रही उस दिन से? चेहरे में चेंज देखो उसके फेस में। Yes, sir. अभी इट बिकम राउंड, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And face become glow. यस। कितने परसेंट चांसेस लगते सर निकलने के पूरा? फादर पूछ रहा है कितने परसेंट चांसेस लगते पूरी निकलने के? Yes, sir. अभी चांस पूछ रहे हैं। ठीक है। नाउ द लास्ट फॉलो। ये दिख रहा है आपको? Yes, sir. वीडियो दिख रहा है? अभी तो अभी चालू नहीं नहीं दिख हुआ। अभी आने का वहां है, तक पहुंच उसके गए। पहले के दिखे। अभी देखो लास्ट फॉलो। अभी आएगा। हाँ हाँ हाँ। अब फेस देखो, हम कैसी कम हो गई। बताओ। Psychosis से सोरा में। see the muscle clear? Yes, sir. Yes, sir. And now you can see the spot here, Yes, sir. slight mild blackish spot है ना? एकदम लाइट है, फेंट है एकदम। This is called inside out, right? Yes. Completely healed. Now देखो थोड़ा सा पहले, अभी वहां पे आप ये आर्टरी भी देख सकते हैं। देखो वापस, ये देखो कैरोटिड आर्टरी भी दिख रही है। Yes, sir. Yes, sir. दर्द होता है क्या? अब हमें क्या एक्सपेक्ट करना है? UTI, sir. UTI, वेरी गुड। UTI. लग रहा? अच्छा लग रहा। अच्छा लगा पहले से? पहले से बहुत अच्छा लगा। अच्छा। सी द UTI। Yes. नहीं उतर जाता है कभी कभी अपने आप उतर जाता है। तेल वगैरह लगाते हैं ना सर, खोपरे का तेल। अच्छा।
Yes. So cure takes place from above downward, from inside out, from more important to less important. Yes. From reversing the miasm, psychotic to Now you are seeing Sora. psychotic to Sora. Yes. सर UTI नंतर मग इचिंग व्हायला पाहिजे का? UTI, it is the sign of Sora, right? अच्छा. और वो यूरेथ्रा के मुंह पे आए, मतलब हाँ हाँ. आउटर सरफेस पे आए. यस. तो it is Sora. Exactly. Itself हम Sora. हाँ, yes, itself Sora. Now lycopodium. Elements from fright, anger, vexation, mortification, apprehension, timidity, public appearing while physician, headstrong and haughty, hard on inferior, soft with superior, serious looking, never smiling child, reserved displeasure, aversion to mental work, lack of responsibility, avoids responsibility, deep-seated progressive chronic diseases, desire for sweets and hot food, hot patient thirstness. This is lycopodium. तो lycopodium में aversion to mental work है. अब ये अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी हुआ कि नहीं हुआ, अकॉर्डिंग टू हैनेमन हुआ कि नहीं हुआ. तो क्या बोलते हैं हैनेमन in aphorism 53? The true mild cures takes place only according to homeopathic method, which, as we have found by experience and deduction, is unquestionably the proper one by which through are the quickest, most certain and most permanent cures are obtained, since this healing art rests upon an internal infallible law of cure, law of nature. Yes. The pure homeopathic healing art is the only correct method, the one possible to human art, the straightest way to cure, as certain as there is but one straight line between two given points, means the homeopathy is based on an infallible law of nature and proves itself as the whole extent one. अगर लॉ ऑफ नेचर फॉलो नहीं हुआ तो क्योर नहीं. Yes. So this is the Hahnemann's word. Yes. So thank you very much. Thank you, sir. Yes. Thank you, sir. 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 Thank you. Thank you, sir. हाँ. Thank you, sir. Please share your views. What you have got from this case, what you have learned from this case. मल्टीपल लाइपोमास ऐसा ठीक होता है क्या? Yes, होता है. पूरा कंप्लीट वैनिश. कंप्लीट वैनिश भी होता है, बट बहुत टाइम लगता है. हाँ हाँ हाँ. तर पोटेन्सी तुम्ही 30 दिले की 200 दिले? 30. 30. सायकोटिक केस आहे म्हणून 30 दिले का? 30, yes. मल्टीपल लाइपोमास में भी यही अप्रोच रहेगा सर? यही अप्रोच, सेम स्लो प्रोग्रेसिंग क्रॉनिक डिजीज, साइकोटिक डिजीज. यस. उसमें भी हमें सिफिलिटी की फाइंड आउट करने का प्रयास करना है. यस. सर आपण याच्यात एलिमेंट फॉर्म वगैरे काही नाही घेतलं ना केस मध्ये? एलिमेंट्स फ्रॉम वाज इंजुरी, but injury
सर ने कहा है कि एलिमेंट फ्रॉम इंजुरी ये रूब्रिक नहीं लेना। आप वहां पे डिस्पोजिशन लो, रिएक्शंस लो, अकॉर्डिंग टू माइजम सिपिलिटिक कुछ मिलता है तो लो। यस सिपिलिटिक केस नव्हती म्हणून आपण एलिमेंट फ्रॉम नाही घेतलं का, असं का? एलिमेंट्स फ्रॉम साइकोटिक केसेस में नहीं लेना है, आपको सोरिक केसेस में लेना है, सोरोसिपिलिटिक केसेस में लेना है, प्योर सिपिलिटिक एक्यूट केसेस में लेना है। ओके सर, यस थैंक यू सर। या थैंक यू वेरी मच। सर कितना टाइम लगता है केस ठीक होने? ये फर्स्ट 2 फॉलोअप्स जो थे वो फर्स्ट फॉलोअप था 3rd डे का, और लास्ट फॉलोअप था कुछ तभी 3rd मंथ का। ओके सर। या जो सर स्लो प्रोग्रेसिंग साइकोटिक डिसीज रहते हैं उसमें क्योर होने में भी टाइम लगता है क्या फिर? यस, टाइम तो लगेगा। अब ये 2 महीने से ही इसे था, इसलिए वो जल्दी क्योर हो गया। अच्छा। वो 2 मंथ्स में वो पूरे जो ट्यूमर था वो डिसअपियर हुआ, लेकिन 3rd मंथ में उसे यूटीआई हुआ। Sir, when that UTI come, you didn't prescribe lycopodium again? No, only single dose was No, given, only SL at the time of UTI. Okay, okay. Thank you. हेलो सर जी। या सर हमको जब जैसे बहुत सारे केसेस में एलिमेंट फ्रॉम मिलता नहीं है, जैसे अभी ये कैंसर की केस है, तो हम मैक्सिमम केसेस में कॉन्स्टिट्यूशनल यानी जीसीएस से निकालना सबसे बेस्ट होगा, यानी एलिमेंट फ्रॉम वगैरह निकलता नहीं है, तो फिर पूरा डिस्पोजिशन पर से मेडिसिन निकालना बेस्ट रहता है। कैंसर केसेस में आपको फिनोटाइपिक प्रिस्क्रिप्शन देना है, जो प्रेजेंट है उसे देखो, जो आफ्टर म्यूटेशन हुआ है उसे पिकअप करो। अच्छा, और इनमें सर वो कैसा हो, जैसा वो लड़के के फादर ने या पेरेंट ने बोला कि ड्यूरेशन बहुत फिक्स रहता है हमको, तो फिर वो इसमें काउंसलिंग और पेशेंट उतने टाइम में रुकने को ना पेशेंट, तो रिजल्ट इसका कैसा, यानी बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन रहता है ना इनका, अपने ऊपर प्रेशर रहता है पेशेंट का। ये पेशेंट तो तलवार लगा के लाया था कि 2-3 दिन में हमें कुछ दिखाना है, नहीं तो ये ऑपरेशन कर डाले। और मेरे लिए ये चैलेंजेबल था, क्योंकि सर्जन ने प्लान करके रखा था, और ये जब केस उनके पास से मेरे पास आई तो उसमें आप समझ सकते हैं कि वो सर्जन की क्या रिएक्शन आ गई होगी, है ना। यस, तो ये हो ही नहीं सकता बोले, आपको मेरे पास आना ही पड़ेगा ना, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। तर ते खूप कॉन्फिडेंट राहतात की होमिओपॅथीने होऊ शकत नाही. होऊ शकत नाही. यस, आणि ते म्हणतात पण की जसा हा प्रश्न विचारला की काउन्सिलिंग कसं करायचं अशा पेशंट मध्ये, याच्याकरिता आन्सर तुम्हीच दिलं त्यांना, की जसे ते कॉन्फिडंट असतात अबाउट सर्जरी की सर्जरी करावंच लागेल, तसं आपण सुद्धा तेवढं 100% कॉन्फिडंट असायला पाहिजे की नाही, आम्ही हे 100% करू शकतो. कोई आपके पास इतना फेथ लेके आता है और आप उसको डिसअपॉइंट करते हैं, तो क्या प्रैक्टिस बढ़ेगी? तो आपको भी उतना कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा ना। यस सर, यस सर। और कॉन्फिडेंट होने के लिए क्या चीज की नीड है, क्या जरूरी है? दैट इज द नॉलेज, स्टडी, रीडिंग। नॉलेज इज द पावर। जैसा नॉलेज बढ़ेगा ऑटोमेटिकली आपके अंदर भी वो पावर आ जाएंगी। यस, दिखाई देगी लोगों को कि ही इज अ वेरी कॉन्फिडेंट, knowledgeable person, knowledgeable physician. Yes. So thank you very much.
Now we Thank will you, stop sir. here. Thank you. Or tomorrow I will show Thank you you, sir. the second approach, that is the slow progressing psychosyphilitic cases. So I will show you the psychosyphilitic case, slow progressing psychosyphilitic case tomorrow. Never miss the tomorrow's session. Yes. So Saturday. Saturday. oh sorry, कल Saturday है ना? Okay, Monday. मंडे को मंडे देखो आप दिवाली है, दिवाली के दिन है शायद. दिवाली है सर. If you are free, then I will show you. रहता है सर. Full strength ठीक चाहिए. है सर. एक दो No, लोग sir. नहीं. रहेंगे सर. 1 घंटे की तो बात है सर. हाँ. जेंट्स लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, लेडीज लोगों को प्रॉब्लम है. यस सर यस दैट्स इट सर. लेडीज लोगों को पूरा घर संभालना पड़ता है, हम लोग तो रह जाएंगे. तो सबका सोचो सर, मेरे ख्याल से सबके हिसाब से तो रखो. दिवाली Yes, कब sir, तक है? आई ठीक है थिंक सर, मंगल को 26 नवंबर सॉरी अक्टूबर. तो दिवाली के बाद लेडीज लोगों को और प्रॉब्लम बढ़ जाता है. घर में मेहमान आते हैं या फिर मेहमान बन के जाना पड़ता है. तो नेक्स्ट वीक सर छुट्टी दे दो ना. नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीक तक. तो आप लोग ही डेट बोल दो, उस दिन उस डेट से हम स्टार्ट करें. 1 नोव्हेंबर से 1 नोव्हेंबर पासून चालेल सर. 1 नोव्हेंबर. हा कोणाचं मिस खूप डिले होईल कदाचित पण. नाही मिस नाही होणार खूप पण गॅप, कोणाचं. खूप लेंथी गॅप आहे. 1 नोव्हेंबर का 1 आवर डेट. सर चालेल एका सर. तासाची गोष्ट आहे, काही मध्ये बघा ना. सर नाही, लिंक तुटून जाईल. नाही म्हणजे ऍक्च्युली कसं आहे सगळ्यांना मॅनेज झालं पाहिजे ना. 9 दिवस आम्हाला पण मॅनेज झालं पाहिजे. आम्हाला पण शिकायचंय. 1 नोव्हेंबरचा डे कोणता आहे तो डे? सोमवार येतो बहुतेक मंडे. नहीं ट्यूसडे. हा मंडे मंडे आहे ना सर. बरोबर मंडेला 1 वीकला सुट्टी होऊन जाते ना. Yes, 1 नोव्हेंबर we will नहीं सर, ट्यूसडे है. Tuesday. Okay, no ट्यूसडे है problem. सर. 31st is Monday. चलो Yes, sir. ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे, नो प्रॉब्लम. ठीक सर. यस. ओके सर. यस, ट्यूसडे को 1 नवंबर को हम मिलेंगे. तब तक सबको हैप्पी दिवाली. दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. आपकी दिवाली बहुत अच्छी. हैप्पी दिवाली. हैप्पी दिवाली. हैप्पी दिवाली सर. थैंक यू वेरी मच. सबको भी दिवाली के बेस्ट विशेष. हैप्पी दिवाली. हैप्पी दिवाली सर. आपको भी, आपके फैमिली को भी. यस, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. बाय बाय. सी यू. हैप्पी दिवाली सर. हैप्पी दिवाली.